back to the series chapter 1 of physics class 9. So this is the last lecture of the series in which we are going to cover what is circular motion and calculations related to it. So let's get started. तो इधर हम सिर्फ एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So an object in moving in a circle is known as the circular motion. An object moving in a circle with constant speed is known as a uniform circular motion. So that's all. तो इसको break करो. Uniform मतलब constant speed, circular motion की मतलब एक object circle में move कर रहा है. Now, these are the 4 type of figures which I have shown you. So which one is a uniform circular motion? This one. An object traveling in the circle with constant speed is known as the uniform circular motion. So this was the first thing which you should understand. Now the second thing which you should understand is कि जो circular motion होता है ना, उसमें velocity is always changing. Always changing. Why? क्योंकि direction is always changing. अब इसे समझ लेते हैं. For example, एक athlete है, वो इन इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे भाग रहा है, तो वो 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, राइट? ऐसे. सिमिलरली अगर वो हेक्सागोनल ट्रैक पे भाग रहा है तो वो 6 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. ऑक्टागोनल पे 8 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा. बट एक सर्कुलर ट्रैक में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड होती है. तो जब वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड है तो वो हर डायरेक्शन मतलब हर टाइम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है. समझ रहे हो? सो फॉर अ सर्कुलर ट्रैक डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. तो अगर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है. एंड वेलोसिटी को चेंज कौन करता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग इन वेलोसिटी. सिंस सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, hence it is always changing velocity, therefore circular motion is also known as the accelerated motion. It always has acceleration. ठीक है, इसलिए हम जब यूनिफॉर्म बोल रहे हैं तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ स्पीड की बात करेंगे. मतलब कि मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है. दिस इज व्हाट रिटन इन सेकंड स्लाइड. लेट मी चेंज द कलर. So when an athlete move along a circular path, then its direction of motion keeps changing continuously. Since the velocity changes due to the continuous change in direction, thus the motion along a circular path is said to be accelerated. Now the third thing is like you people already know, but ऐसा है कि this is the calculation thing. तो ये सिंपल मैथ्स है, लेकिन एक बार इसे मैं समझा रही हूँ जिससे कि कल को अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये आपको ना बिल्कुल नया ना लगे. लाइक यू ऑलरेडी नो, यू ऑलरेडी हैव सीन इट. तो बस इसलिए बता रही हूँ. तो दिस इज सिंपल. फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, तो सर्कल का जल्दी से सर्कमफेरेंस बता दो कितना होता है. ओके, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द सेंटर. ओके, so circumference is the 2 pi r. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक पूरा सर्कल, एक पूरा राउंड लगा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर. सो दिस इज द डिस्टेंस इन वन राउंड. ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्पीड क्या रही होगी. सो व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपन को पता है एक राउंड में कितना लगा, 2 pi r. टाइम आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में. सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड फॉर द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस होता है 2 pi r और टाइम तो t अपन को दे ही रखा होगा. अब इसमें भी आपको ना पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए, विच आई होप आप सबको 5th क्लास से पता है. दैट इज 3.14 और 22/7. बोथ आर वैलिड. ओके, सो दैट्स ऑल. सो बेसिकली हमने ये जान लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है. दूसरा हमने ये जाना कि वेलोसिटी हमेशा चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन. थर्ड चीज अपन ने सिंपल बेसिक कैलकुलेशन देख ली. फोर्थ चीज हम एग्जांपल देखेंगे विच आर कंप्लीटली इजी टू अंडरस्टैंड. तो एक ना आपने स्टोन ले लिया और उसे एक धागे से बांध लिया और उससे अब आप रोटेट कर रहे हो सर्कल में विद अ यूनिफॉर्म स्पीड.
तो एक तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है और वो सर्कल में रोटेट कर रहा है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ uniform circular motion. Similarly, the motion of blades of the fan, the motion of moon and the earth, a satellite in a circular orbit around the sun. All these are the example of a uniform circular motion as they are traveling in circular path and with a uniform speed or the constant speed. So let's do this question. The minute hand of a wall clock is 10 centimeter long. तो एक मिनट हैंड है, मतलब दो हैंड्स होते हैं ना, आवर हैंड एंड मिनट हैंड. तो जो मिनट हैंड की लेंथ दी हुई है दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके. Find its displacement and distance covered from 10 am to 10:30 am. तो 10 am to 10:30 में ये कितना ट्रैवल कर लेगा? 12 से 6 तक ये ट्रैवल कर चुका होगा. सो बेसिकली इसने हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस मूव कर लिया है. तो अब अपन को निकालना है डिस्टेंस. सो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ विच इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस. यहाँ पे रेडियस की वैल्यू अपन क्या लेंगे? 10 सेंटीमीटर विच इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड. ओके. And what is the displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final point. So you just have to connect both. तो जब मैं दोनों को connect करूंगी तो actually displacement is nothing but equal to the diameter, and diameter is nothing but equal to 2r, sorry, which is equals to 20 centimeter. So these are the questions of the day. Write your response in the comment section below. So these are the two questions. The prerequisites for to do this question are speed का formula होता है distance upon time, and 1/4 is equals to the 1/4 of the circle. तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए to perform these questions. So now here we have completed the chapter motion. So this was extremely important, and I feel that with me in this journey you have find this chapter interesting and easy. So congratulations to each and everyone. Do subscribe to my channel, hit the like button if this video helped you, and share with your friends. Thank you so much for watching.